पॉर्न के खतरनाक साइड इफेक्ट्स, साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं। आज ये वीडियो मैंने पहले भी बताया हुआ है, पॉर्न खतरनाक क्यों है या डेंजर्स ऑफ पॉर्न क्या है। वो वीडियो बने हुए हैं और आपने देखे भी हैं शायद, और नहीं देखा तो देख सकते हैं या ये वाला देख लो। लेकिन इस बार मैंने कहा कि थोड़ा और काम करते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगा कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि हाँ भाई पॉर्न खराब है, इसलिए खराब है। इट्स लाइक अ मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि भाई भाई ये तो गलत काम है, और ये मतलब एक तरह से अच्छा नहीं लगता ये सब करना, या मैं अपनी राय दे रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ठीक है, आपने वो देखा, लेकिन मैंने कहा बात सिर्फ राय तक या बात मोरालिटी पे नहीं आ जाना चाहिए कि भाई हाँ मॉरली ये चीज करेक्ट है या गलत है। ऐसे कोई संस्कारी वाली बात नहीं कर रहा मैं पॉर्न की आज, कि संस्कार के लिए अच्छी है कि नहीं, वो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, एंड वो सब मैं यहाँ नहीं करता इस चैनल पे। बात ये है कि साइंस ने कोई स्टडीज की हैं क्या जो बता सकती है कि पॉर्न के एक्चुअली में नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और आर देयर रियली दैट मेनी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, क्या ये साइंस का डेटा क्या है। तो आई थॉट कि इस पे थोड़ा सा मैं रिसर्च करूं और थोड़ा सा आपके बारे में शेयर करूं। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है अगर आप चाहो तो, बट कई बार क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि ठीक है कुछ भी हो रहा है। तो अगर आप जाओ तो एक्चुअली साइंटिफिक स्टडीज बहुत हो चुकी है, ये ओपिनियन नहीं है। ये लैब में स्टडीज होती हैं, रिस्पोंडेंट्स के साथ चेक की जाती है चीज़ें। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं पोर्नोग्राफी पर, लेकिन कुछ स्टडीज जैसे मैं आपको, लेट मी जस्ट ट्राई टू शेयर दिस स्क्रीन। जैसे ये वाली है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ pornography use in journal of sexual medicine, right? This is one of them, consequences of pornography use. ठीक है, now there's another one, structural therapy with a couple battling pornography addiction. There is another, psychology of men and masculinities में एक आया है, no harm in looking right, men's pornography consumption, body image and well-being, कि आपकी बॉडी इमेज पे क्या होता है, राइट? Pornography in the current digital technology environment, overview and special issue of pornography. This is another journal of treatment and prevention, sexual addiction and compulsivity. उसके उसकी स्टडी है, how porn affects relationships. A new study looks at partners porn use in real time. Relationships में क्या इफेक्ट होता है, potential associations of pornography use with sexual dysfunctions, integrative literature review of ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। यू कैन सी, एक नहीं है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। affection substitution, effect of pornography consumption on close relationships. These are another sage journals. This is not a full list of studies, this is just a few, and I'm just trying to show you कि ये जो डेटा है वो यहाँ से निकल के आ रहा है, और यहाँ से निकल के जो डेटा आ रहा है वो क्या कह रहा है वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। बिकॉज कई बार हमें लगता है कि अरे यार ये लोग तो बोलते ही है, इनको बस, अब मैं समझ गया, हाँ इनको मतलब अच्छा नहीं लगती, ये चीज़ संस्कारी नहीं है। बात वो नहीं है, बात ये है कि साइंस ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की है कि कैसे पॉर्न आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है, आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है, एंड क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। वो सब दे आर देयर, दिस इज द विकिपीडिया आर्टिकल ऑन इफेक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी, which is there, which is a very long article. If you want to read that, you can read that also. um, of course Wikipedia is not the perfect, because anybody can edit it, but like I said, there is a lot of studies that are actually there in journals which talk about pornography और उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सो यू मस्ट नो दीज थिंग्स। सी व्हेनेवर लाइफ में कुछ करना है नहीं करना है, ये मेरा बताना आपको नहीं है काम, पर हाँ किसी भी चीज़ के साथ क्या क्या डेंजर्स एसोसिएटेड है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज पोर्नोग्राफी एडिक्शन बन सकती है, राइट? एनीथिंग दैट कैन बिकम एन एडिक्शन इन लाइफ, एंड इट इज नॉट अ एडिक्शन which is good for you, मतलब it's not an addiction that is leading to some pursuit of some goal, then it is bad। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर आपको एडिक्शन है जिम की, राइट, अगर आपको एडिक्शन है पढ़ाई की या अच्छे मार्क्स लाने की, देन दैट एडिक्शन यू कैन जस्टिफाई, अच्छी एडिक्शन है यार, तेरी बॉडी बनेगी, तेरे मार्क्स आएंगे, तेरे को अचीवमेंट चाहिए, दोज आर गुड इन अ वे, राइट, एंड दोज आर गुड हैबिट्स। बट any addiction that is not like that, it is wasting your time or makes you dependent on something, matlab addiction that is not good, ultimately you are dependent on that
एडिक्शन टू फील नॉट हैप्पी, एंड धीरे धीरे किसी भी एडिक्शन में आपको आदत पड़ती जाती है। तो जैसे जो आदमी शुरू शुरू में सिगरेट पीनी शुरू करता है उससे बड़ी किक मिलती है, लेकिन अगर आप किसी भी रेगुलर स्मोकर से बोलोगे, उसको किक नहीं कोई खास मिलती। उसको है, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो आई फील टेरेबल। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, विदाउट सिगरेट्स दैट मैन इन हिज नॉर्मल स्टेट is now feeling terrible, and only when he has a cigarette he feels normal. So he's dependent on some external thing which is bad for him, which is bad for his lungs, whatever, which can give him cancer, to give him a feeling of normalcy. Similarly, pornography addiction bhi agar ho jaye, then you need porn to feel normal. It will not give you joy after a while. You are addicted, you just want it because it will make you feel little bit normal for a little while. But at the same time, there is now data. One of the studies said ki 75% of people in that group who used to watch pornography, जब उनसे pornography हटाई गई, 75% people had withdrawal symptoms. जैसे ड्रग एडिक्ट से अगर ड्रग ले ली जाए तो उसको फिर विड्रॉल सिम्टम्स होता है, एंड देर आर लॉट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स जिनको अगर मतलब अगर उनकी लाइफ से अगर आप काफी पॉन देखते हैं तो आपके लिए अगर उन्होंने हटा दी, देन इट विल withdrawal symptoms include erotic dreams, irritability, attention disturbance, means you can't study and all that, sense of loneliness, right? Sense of loneliness, you feel very lonely, which is not a good feeling. And then of course you have things like depression, anxiety, obsessive thoughts, and intense longing for pornography. So this is what will happen as the addictive part of pornography is concerned. तो आप देखते जाओ ये आपके साथ होने वाला है. Then other studies have shown that body image and self esteem पे फर्क पड़ता है. For men especially, when men watch a lot of porn, they feel हम खुद कुछ खास नहीं है. Maybe it's because they show these stud boy type guys in porn with perfect bodies and big big you know what. So तुम्हें लगता है कि यार मैं कितना बड़ा गधा हूँ and मैं शीशे में तो ऐसा नहीं लगता, and you therefore start feeling very low image of yourself. You may not be saying it like that in your head, but you automatically start feeling very low and underconfident, and you have this thing called low self esteem, which is basically मैं चू डैश डैश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में. नॉट अ गुड थिंग, राइट? हियर आई एम रनिंग अ मोटिवेशन चैनल, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम लाइफ में कुछ कर सकते हो. एंड देन बिकॉज ऑफ द स्टूपिड थिंग कॉल्ड पोर्नोग्राफी which is lowering your self esteem, and it's now in a scientific study ki this is what will happen to people who do this ki you this was a study of 359 college men, that high viewership of pornography relates to increased masculinity and body dissatisfaction. मतलब आपको अपनी मर्दानगी से खुशी नहीं है, अपनी बॉडी से खुशी नहीं है, again not a very good thing, right? There are effects on sexual desire. People who watch a lot of porn, actually funnily enough, they want to watch porn, but they don't have so much desire for sex after a while. They have desire for porn. Can you realize how horrible it is? Human beings are not supposed to be like that. I don't want to have sex in like normal, natural way and have children or whatever. I want to watch porn. So that is what happens to your sexual desire system gets manipulated, your brain gets manipulated. So that's not very good. Sexual function, which means actually your sexual private parts, body parts will not work properly because you are watching so much porn and masturbating with it. You are just not going to, your equipment is not going to work properly in a real sex situation. Those are perfect images with lights and camera and perfect models, airbrushed and makeup, ये करके. तो real life partners तो वैसे नहीं होते. So the whole real life sex will feel like bad porn. And just it will not stimulate you and you will not respond in the natural way, and your body functions will not be okay. Your sexual dysfunction will happen, erectile dysfunctions, all these other things, delayed or ejaculation, lack of sexual desire, erectile dysfunction, all these are came in the paper. I didn't make them up, right? These are all done after studies, right? Another thing is sexual satisfaction. It can damage it actually. It just can damage the whole feeling of being satisfied after sex, actual sex, because you want porn. That's all you want, right? Addiction, right? So things like that. There have been issues of
sexual violence. People, I don't know if all that is there. There's some studies done like that. There are effects on relationships. So studies have seen that, data is there that sometimes people can lower the quality of the relationship they have in life by watching a lot of porn. I think that is quite natural why that will happen. So even they have even done studies on students, adolescents, like school students, something like that, and that it creates all kinds of problems, that they have very unrealistic attitudes on sex, and that what are women, and they have a lot of frequent thoughts of sex, and they don't see women as people, because they see them as sex objects, or I don't know what, things like that. So these are some of the things that will happen. Your body, your mind, your motivation, your loneliness, depression, body parts not working properly, real life relationships suffering, all these things will happen. All those videos you see, आपको लगता है मेरे पास तो 5 GB डेटा बचा हुआ है, मैं जितना मर्जी पॉन देख सकता हूँ, फ्री में है, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अरे वाह, I will never get to see these girls naked. I understand. I'm a guy, I've been through engineering colleges. I understand, guys. I know what the kind of thought process comes. But, you must know कि ये negative aspects भी हैं इसके, right? And then decide, what role does this play in your life? Is this a once a month thing, once a week thing, once a day thing? It's once a day means you are really in a very bad place, right? It's going to lead to all kind of negative things for you. And I don't want you to be this. तुम इस धरती पे पॉर्न एडिक्ट बनने तो नहीं आए ना यार। तुम इस धरती पे बहुत कुछ करने आए हो। यू वांट अ गर्लफ्रेंड, गेट अ प्रॉपर गर्लफ्रेंड। देयर आर वेज, नॉट लाइक कि कैसे पटाना है, बट बिकमिंग अ हाई वैल्यू मैन, बिकम समबडी who makes good money, has a good career, has a good job, who looks good, who dresses well, who knows how to talk। बात करना सीखो, ड्रेस करना सीखो, पैसे कमाना सीखो, मसल बनाना सीखो। अपने आप ऐसे लड़के बन जाओगे, टॉप 5% वाले लड़के। तो लड़कियों को भी तो अल्टीमेटली लड़के तो चाहिए ना उन्हें भी। तो वो कौन से लड़के चाहिए? उनको बढ़िया लड़के चाहिए। तो तुम बढ़िया लड़के बन जाओ। इजंट दैट अ बेटर रूट इन लाइफ देन सेइंग नहीं नहीं मैं तो पॉन में घुस जाता हूँ क्योंकि पॉन फ्री है? क्या कर रहे हो यार? ऐसे तो आई एक्सपेक्ट यू टू डू बेटर। यू नो यू कैन डू बेटर। यू कांट डू दिस, राइट? सो स्टॉप डूइंग दिस, right? Find ways to quit. There are ways on the internet you'll find, or reduce it a lot, and don't make it a focus of your life, and don't let these things damage you in your youth. If all these negative side effects happen, how will you get anywhere in life? So ये जो मुफ्त की चीज है ना, ये मुफ्त की नंगे नाच जो तुम देख रहे हो, ये बड़े मुफ्त के नहीं है, ये बहुत महंगे पड़ेंगे बाद में। जस्ट wanted you to remember that and make an informed view. You can give your own thoughts on what you think is the issue, because as of course, I'm sure, when I was very young, like you guys, I didn't have internet so freely available and on phones. We didn't have porn. We had porn, but like there were literally magazines, and people would share, watch a magazine. It was also porn, but a lot less, right? It's not as easily available. It's not in your pocket all the time. So is this very rampant now in the younger generation? This is a learning for me. You can give me. So please tell me in the comments below. And yeah, any other suggestions or tips for people who are trying to get rid of it? What worked for you? How did you quit it if you have, or how did you reduce it a lot? Please share that. It'll be helpful to others. Thank you for watching. Take care.